Class 10 exercise 1.3 question number 1 prove that root 5 is irrational. रूट 5 को हमें क्या दिखाना है कि एक इरेशनल नंबर है. हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे. पहले सपोज करेंगे कि ये जो नंबर है रूट 5 वो एक रेशनल नंबर है और कुछ एविडेंसेस मिलेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि ये रूट 5 जो है वो रेशनल नहीं है. दैट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. बट कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए प्रोसेस. इफ पॉसिबल let us suppose that root 5 be a rational number in the form of p by q where P and Q are co-prime. अब ये co-prime क्या है? कोई भी दो नंबर जिसका HCF यदि 1 आ रहा है, एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर लीजिए उसका एचसीएफ यदि 1 आया तो वो कोप्राइम्स कहलाएंगे. समझ रहे हैं क्या हम बता रहे हैं? नेक्स्ट नाउ रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू बिकॉज बताएं कि किस फॉर्म पे है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग both sides, so 5 is equal to p square by q square. This implies p square is equal to 5q square. इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करेंगे. This implies p square is multiple of 5. अब ये p स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल होगा. रीजन p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू p स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि ये 5 से मल्टीपल है. 5 इंटू p स्क्वायर है तो ये भी 5 से मल्टीपल होगा. दिस इंप्लाइज p इज मल्टीपल ऑफ 5. यदि p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं. लेट p इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m. कुछ इंटीजर m के लिए ये सही है. तो क्या लिखें यहाँ पे p इज इक्वल टू 5m. पुटिंग p is equal to 5m in equation 1 we get p means 5m square is equal to 5q square. 25m square is equal to 5q square. ये देखिए 5 and 25 5 से कैंसिल हो जाए. This implies 5m square is equal to q square. This implies q square is equal to 5m square. This implies q square is multiple of 5. This implies q is multiple of 5. Equation number 3. Now see equation number 2 and equation number 3. P is multiple of 5, Q is multiple of 5, means P and Q is multiple of 5.
means both have common factor as 5. From equation 2 and 3 we get P and Q are मल्टीपल ऑफ 5. P and Q दोनों 5 का मल्टीपल है. बट क्या बताए थे ये दोनों को प्राइम है, तो क्या यहाँ को प्राइम आया? नहीं आया ना. दिस इंप्लाइज P and Q आर नॉट को प्राइम. This contradicts our supposition that root 5 is rational number. Thus, root 5 is an irrational number. Proof. देखिए ये क्वेश्चन रूट 5 के बेसिस पर है. मेरा क्वेश्चन रूट 2 पर भी हो सकता है, मेरा क्वेश्चन रूट 3 पर भी हो सकता है, रूट 7 पर भी हो सकता है. बट द प्रोसेस विल बी सेम. ये रूट 2 सपोज कीजिए कि रूट 2 क्वेश्चन रहेगा. क्या करेंगे हमें सेम ऊपर वाला लाइन होगा, ये 5 रूट 5 की जगह पे रूट 2 हो जाएगा. यहाँ पे 2 होगा, मीन्स 2 होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा. द प्रोसेस विल बी सेम बट द नंबर विल बी चेंज्ड. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम में हर एक साल एवरी ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है. ओके, exercise 1.3 question number 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. ये हमें irrational नंबर दिखाना है. ठीक है, let us suppose that three plus 2 root 5 be a rational number in the form of P by Q. Since 3 plus 2 root 5 is equal to P by Q, one more thing, where P and Q are co-primes. It is necessary to mention this implies 2 root 5 is equal to P by Q minus 3. ये जो रूट वाले नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे एंड अदर्स नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. दिस इंप्लाइज 2 root 5 is equal to P minus 3Q by Q. एलसीएम क्यों हो जाएगा? Q into 3Q. Okay. This implies root 5 is equal to P minus 3Q by 2Q.
दिस इंप्लाइज, इस नंबर को कंसिडर करते हैं p and q co-primes, that means they are the integers, 3 integers. So p, 3 and q are integers, means p minus 3q by 2q is a rational number. This implies p minus 3q by 2q is a rational number. Is equal to given है ना, तो क्या है? This implies root 5 is also a rational number. Root 5 is a rational number. Root 5 rational number solution करने पर है. But we know that root 5 is not a rational number. It is an irrational number. Okay? But we know that root 5 is an irrational number. सॉल्व किए तो रूट 5 एक रेशनल नंबर आएगा, बट पहले से हमें पता है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो क्रिएट होगा. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर supposition that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Thus 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Proof. Okay, clear है?